तो अभी मैं प्रतीक को पिकअप करूँगा, फिर वहाँ से चलेंगे प्रगति मैदान, भारत मंडपम। प्रगति मैदान ही मुँह से निकल जाता है, भारत मंडपम, फिर वहाँ से वी विल हेड टुवर्ड्स ऑटो एक्सपो। लेट्स गो। अभी यहाँ से प्रतीक का घर दिखा रहा है 47 मिनट्स। और कैमरा वाइज जस्ट ये गोप्रो है, इंस्टा 360 है पीछे, और मोबाइल फ़ोन, और कोई कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। लेट्स सी हाउस द एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। यूट्यूब में तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी देख लिए, मैंने भी देख लिए। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट हैंड एंड थ्रू माई लेंसेज नाउ। तो फाइनली आई हैव रीच्ड प्रतीक्स पिकअप लोकेशन, जो उसका घर है वो सामने, वो जो है ये वाला, ये मेन रोड है, हमें यहीं से निकलना है बाहर। होपफुली इट विल ऑल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। गौ माता गुड मॉर्निंग। गुड थिंग दैट इस बार ऑटो एक्सपो के पासेस फ्री कर दिए उन्होंने, मतलब देयर इज़ नो हार्डकोर टिकटिंग सिस्टम लाइक द प्रीवियस ईयर्स। खरी गाड़ी में इतनी गर्मी लगने लगी है ना, मतलब पता चल रहा है कि विंटर्स आर ऑलमोस्ट ऑन द वे ऑफ गोइंग बैक। ख़त्म विंटर्स, ख़त्म, टाटा बाय बाय होने का वक्त आ गया है। तो मैंने जैकेट उतार दी, बहुत गर्मी लग रही है। प्रतीक के घर के यहाँ से भारत मंडपम का जो बेसमेंट पार्किंग वाला लोकेशन है, दिस इज़ अराउंड 36 मिनट्स। तो ये अगर आपको लोकेशन, अभी तो वैसे इस साल तो ऑटो एक्सपो ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट आज ही है, 22 तारीख तक है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, तो अगर भारत मंडपम में अगर आप गाड़ी लेके आते हो या बाइक लेके आते हो, तो आपको जीपीएस में डालना है भारत मंडपम। लुको मैं दिखाई देता हूँ, मैं भी भूल गया हूँ। ये डालना है आपको, भारत मंडपम बेसमेंट पार्किंग 1, ये आपको लोकेशन में डालना है। दैट इज़ हाउ वी विल गो। आ गया प्रतीक सामने से, ठीक लोकेशन पे ही हूँ। हेलो हेलोज हेलोज, हेलो हेलो हेलो। हम हिलाते हुए आ गए। ये एडिट करना पड़ेगा, ये एडिट करना पड़ेगा। मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, मैंने उतार दिया ये जैकेट, अभी जस्ट उतारा मैंने इसको। ये देखो गर्मी का असर, मैंने बोला ना विंटर्स खत्म है। विंटर्स आए कहाँ? हाँ, इसके लिए आया नहीं था। देखो 2-3 बार फॉग होने से विंटर्स नहीं होता है। स्पीति में थी। हाँ, स्पीति। वॉच द वीडियो, गो टू द प्लेलिस्ट, वी विल लिंक इट। हाँ, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रमोशन।
भाई साहब भीड़ देखो, भीड़ एंट्रेंस के लिए भीड़। पैविलियन 6 है ये। इस साइड के गेट, इस साइड। कैसा लग रहा है भीड़? पसीने छूट गए। हॉल नंबर 14 द गेट्स आर क्लोज्ड, सो आई डोंट नो कैसे कहाँ पे एंट्री होगी, कब होगी। ये लास्ट वाला हॉल बचा है हमारा।
इसका हाल देखो, जैकेट खोल लिया इसने, मैं तो जैकेट खोल के ही गया थैंकफुली। अभी तो भाई साहब लोगों को देख के लग रहा है बर्फ़ गिर रही होगी बाहर, लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आए हैं। इसको तो गर्मी लगती नहीं है, ठंडी लगती है, हाँ ठंडी नहीं लगती। बट द ऑटो एक्सपो इज समवॉट अंडरवेलमिंग। न्यू लॉन्चेस हैव बीन शोकेस्ड। हाँ, एंड ईवी एंड ईवी। ईवी सबसे ज़्यादा है, बट इंडिया स्टिल नॉट रेडी फॉर ईवी। इतने पैसे नहीं है भाई ईवी खरीदने के लिए। लाइट आती नहीं है गाजियाबाद में। हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से दूर हट के ईवी चिल्लाने से नहीं होता है। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी ढूंढते हैं अभी। तो अभी टाइम है 8:45, रात के 8:45, शाम के 8:45, जो भी बोलो। अब मैं घर पहुंचा, वहाँ पे निकला, फिर प्रतीक के घर बैठे, गप्पे वप्पे मारे, ये सब कर कुरा के, फिर और भी कुछ काम थे, ये सब कर कुरा के घर लौटा मैं 8:45। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपको पता ही क्या करना है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक एंड शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको आपके साथ किसी और ब्लॉग में। बाय बाय।